Are you able to hear me out? I'm just checking if everyone is able to hear me, see me. Lovely, fantastic, guys. Just give me a second. And super. Hi, everyone. It is fantastic to have you all here. This is Friday at 4, and we are going to discuss about markets. I'm just checking with my team if we are good to go live and if this webinar is shared across everywhere and our mentees are also able to hear loud and clear. And यहाँ पर आप सभी सुन पा रहे हैं? लवली। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट है और ऐसे में इट्स इट अ बुल ट्रैप और अ बेयर ट्रैप वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट वी आर गोइंग टू लुक एट इट इन अ सिंपल वे वार्म वेलकम सत्यश्री रंजन श्वेता अरोरा लवली टू हैव यू आल्सो हियर सौरभ तुषार it's always fantastic to have every one of you over here. What's going to happen next, how markets are going to behave and what are we going to see from here, ये सारी चीजें मैं आपको अभी यहाँ से बताऊंगा मार्केट के बारे में. बट बिफोर आई मूव ऑन आई जस्ट वांट टू आस्क यू ऑल, एक पोल लेना चाहूंगा मैं दोस्तों बहुत ही क्विकली. ये पोल में ये पूछना चाहता हूं आने वाले वीक में व्हाट इज द निफ्टी ट्रेंड, आपको क्या लग रहा है. ये एक पोल ले रहा हूं मैं यहां पर. आने वाले वीक में पोल ले रहा हूं कि क्या लग रहा है निफ्टी ट्रेंड ऊपर है या नीचे है, लग क्या रहा है. मेरे ख्याल से यहाँ डोजी बनना चाहिए. इक्वल नंबर ऑफ पीपल वर आस्किंग मे बी अपसाइड मे बी डाउन साइड मे बी कंफ्यूज्ड, दैट्स व्हाट पीपल आर सीइंग एंड दैट इज हाउ आई एम लुकिंग एट इट. यहाँ पर अगर हम देखेंगे, मैं ये पोल को बहुत क्विकली एंड कर रहा हूँ. पीपल हु आर वाचिंग दिस ऑन यूट्यूब, आप मेरे साथ में जुड़ सकते हो ऑन द प्लेटफॉर्म हियर. आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर इट अक्रॉस वेरी वेरी क्विकली. यहाँ पर मैंने लिंक शेयर की है हमारी. आप यहाँ पर जूम पे आ जाइए बिकॉज द क्लैरिटी एंड एवरीथिंग ऑन द जूम इज गोइंग टू बी मच बेटर. डायरेक्टर साहब यूट्यूब पे भी एक्टिव रहिए सो दैट पीपल कैन वॉच एंड डू दैट. ओके लवली. ये पोल में एंड कर रहा हूं. अगर आप पोल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जूम पे आइए बिकॉज जूम के ऊपर पोल एक्टिव है. आई एम एंडिंग द पोल नाउ यहां पर और देखते शेयर कर रहा हूं मैं रिजल्ट्स. क्या दिख रहा है यहां पर आप लोगों को. देर इज 62% पीपल थिंकिंग ऑन द अपसाइड, 38% थिंकिंग ऑन द डाउन साइड. What's going to happen from here on is going to be very very interesting. Now आज का जो वेबिनार है इसके अंदर मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा ऑब्जेक्टिवली चार्ट पे दिखा के. आपको करना कुछ नहीं, मैं इस पोल को स्टॉप कर रहा हूं शेयर करने के लिए. आपको करना कुछ नहीं है. यू जस्ट हैव टू से यस और नो वंस आई शो द चार्ट. सिंपल सिंपल बेसिस पे मैं आपको यहां पर लिखूंगा और हम कंक्लूजन बनाएंगे कि स्ट्रैटेजी कौन सी चलने वाली है आने वाले वीक में. चलेगा क्या. हम हमारे मेंटीज के साथ ऐसा करते हैं, सारी चीजें चेक करते हैं. बट यहां पर हम बहुत ही सिंपल वे से वी आर गोइंग टू लुक एट इट इन अ वेरी वेरी सिंपलिस्टिक फैशन कि हो क्या है. एंड बहुत ही डिफरेंट बिहेवियर है वेयर बैंक निफ्टी इज ब्रेकिंग आउट टचिंग लाइफ टाइम हाइज अगेन एंड अगेन. निफ्टी इज स्टिल लैगिंग. आईटी लग रहा है कि जाएगा फिर रुक जाता है. ऑटो वाज आउट परफॉर्मिंग सडनली स्टार्टेड मूविंग डाउन. मतलब स्मॉल कैप सांस लेना शुरू करता ही है कि ट्रम्प आ जाते हैं और स्मॉल कैप के ऊपर फिर से लगाम लग जाती है. ऐसा हो रहा है क्या. आप लोग भी देख रहे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे ही हम सोच रहे थे कि स्मॉल कैप में थोड़ा सा मोमेंटम बनना चालू हो गया है, मार्केट चलना चालू हो गया है, स्टॉक्स वापस से लग रहा है चलेंगे, इतने में कोई ना कोई न्यूज या इवेंट्स आ जाता है और मार्केट पे भारी पड़ जाता है. तो ऐसे में करना क्या. लेट मी वेरी क्विकली शेयर अक्रॉस माय स्क्रीन. यहाँ पर मैं अपना चार्ट शेयर कर रहा हूं आप लोगों के सामने. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. आर यू एबल टू सी द स्क्रीन हियर एवरी वन ऑफ यू. Are you able to see? I want you to participate, guys. If you participate, put down on the chat, put down in the comment. तो मुझे समझेगा कि आप लोग यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हो, आपको समझ में आ रहा है. लवली, बहुत जरूरी है मुझे यहाँ पर. सो ये स्क्रीन मैंने आप लोगों के सामने रखी है, शेयर की है. एंड बहुत ही सिंपली मैं आपसे ये वीकली चार्ट दिखा. नाउ वीकली चार्ट पे एक सिंपल सा क्वेश्चन शुरुआत कर रहा हूं मैं आपसे बेसिस ऑफ what you people might have learned so far in
any of my masterclass. Is this a reversal bearish candle? Is this a reversal bearish candle as per the 3 candlestick rule? कौन कौन है यहां पर जो सही देख रहा है? ये वीकली चार्ट है. वीकली चार्ट पे डू वी सी द रिवर्सल हैपेंड येट? यहां से हुआ है क्या? अभी तक तो लग नहीं रहा है. कलर रेड है, घिरा है मार्केट. 3 कैंडलस्टिक रूल के हिसाब से नहीं है, क्योंकि हाई अभी भी प्रायर हाई के ऊपर है. दिस कैंडल, डिड इट रिवर्स? Did it reverse as per the 3 candlestick rule on the downside? I am asking. On the downside, I am asking. No. Fantastic, Kabir, Sanjeev. रिवर्सल नहीं हुआ है. गौरव, बिल्कुल. प्रकाश, एब्सोल्युटली. क्योंकि 3 कैंडलस्टिक रूल के हिसाब से हमें रिवर्सल चाहिए विथ हाई बिलो प्रायर हाई, लो बिलो प्रायर लो, क्लोज बिलो प्रायर लो. मतलब वीकली अभी तक ट्रेंड चेंज नहीं हुआ. ओके, यहां तक समझ में आया. डेली में क्या चल रहा है? डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे कौन आंसर देगा सबसे पहले? डेली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव रिवर्सल हुआ है क्या? वीकली पे मैं पूछ रहा था नेगेटिव रिवर्सल हुआ है क्या? डेली पे डू यू सी एनी काइंड ऑफ अ पॉजिटिव रिवर्सल येट? द वीकली इज नॉट चेंज्ड येट, नॉट चेंज्ड. डेली पे देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉजिटिव रिवर्सल. दैट्स वेरी वियर्ड एंड स्ट्रेंज. वन, मैं कैंडल को काउंट करके लिख रहा हूं. 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल हो चुके. 8 दिन जा चुके, 8 ट्रेडिंग सेशंस हो चुका है, और डेली अभी भी बेरिश ही है ना. ये दूसरा क्वेश्चन था. तीसरा क्वेश्चन मेरा है, इफ आई एम लुकिंग एट द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम सपोर्ट. टाइम सपोर्ट पता है ना आपको? बेसिस ऑफ साइकिल्स, basis of time cycles. Can I say prices are still fluctuating, flirting around the time support area? Can you see that? Can you see the close? Can you see the power of this level? Are you able to see the power of this level at least? 25,680 का जो लेवल है यार, क्या चल क्या रहा है? मतलब रुके नहीं, मतलब वहां पे मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है. दिस इज द पावर ऑफ टाइम सपोर्ट एरिया. टाइम सपोर्ट एरिया क्या होता है मालूम है? जहां से हम प्राइसेस सपोर्ट लेते हैं, टाइम के यहां पर से सपोर्ट ले रहे बार बार, एंड दिस इज द पावर ऑफ टाइम सपोर्ट एरिया. वी कैन क्लियरली सी दैट. एंड बेसिस ऑफ द टाइम सपोर्ट एरिया वी कैन से दैट द ओवरऑल मूवमेंट हैज नॉट येट चेंज्ड बैक एनीवेयर. इट इज स्टिल देयर. मतलब आइडियल केस सिनेरियो ब्रेक नहीं होना चाहिए. दैट वाज द आइडियल केस सिनेरियो. बट ये ब्रेक हो चुका है. मतलब फिलहाल ब्रेक हो चुका है, तो गड़बड़ तो है, ये तो पक्की बात है ना. ऐसे में करना क्या है? सो इफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू लुक एट इट व्हेन मार्केट्स आर मूविंग इन सच अ फैशन, द सिंपलेस्ट वे टू सी वेयर इज द वॉल्यूम हैपनिंग. I want to see the volume. I want to see what is happening around. Where is it happening? कहां पर हो रहा है? ये सारी चीजें, ये सब चीज हम चेक करना पड़ेगा. And we can see clearly what is the volume profile suggesting. I'm going to show you something very interesting today. Something different and interesting. Where I'm going to show you a chart of market profile. Market profile is a very classic concept. Do you want to see market profile? मार्केट प्रोफाइल एक अलग कॉन्सेप्ट है. मैं वेव थियरी पे आऊंगा. ये चार्ट दिख रहा है क्या? इसके अंदर ओआई प्रोफाइल है, विच इज ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल. शोइंग यार 26,000 पे गड़बड़ तो है, निकल नहीं रहा है वो लेवल. ठीक है. ओआई प्रोफाइल को मैं यहां पर, अगर आप देख रहे हो, साथ ही में मैं ओआई प्रोफाइल को हाइड कर देता हूं, और मार्केट प्रोफाइल पे हम चार्ट देख रहे हैं. What is market profile? Market profile is a concept which helps us to understand a different plot. जैसे कैंडलस्टिक प्लॉट होता है, प्राइस एक्शन प्लॉट होता है, वैसे ही मार्केट प्रोफाइलिंग एक प्लॉटिंग मेथड है. ठीक है. ए मतलब स्टार्टिंग का 30 मिनट्स, बी मतलब नेक्स्ट 30 मिनट्स,
सी मतलब उसके बाद वाला टाइम, एंड यहां इस तरीके से प्राइसेस कहाँ बंद हो रहे वो पता चलता है। यहां पर आप क्लियरली वो देख सकते हो। और इसके मार्केट प्रोफाइल के साथ में आप एक और चार्ट देख सकते हो जो कि हम कहते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल। मैं यहां पर हाँ, यहां पर आपको मार्केट प्रोफाइल दिख रहा है जो प्लॉट किया हुआ है, एंड पॉइंट ऑफ कंट्रोल हमने डाल दिया है। मैं खाली ये चेक कर रहा हूँ वॉल्यूम प्रोफाइल, वॉल्यूम्स फ्यूचर पे दिखेगा इसलिए यहां नहीं दिख रहा है। मैं खाली फ्यूचर चार्ट पे जाके वॉल्यूम प्रोफाइल भी हमारा आ जाए ना। ये बना मेरा कंप्लीट सेटअप यहां पर। ना व्हाट इज दिस सेटअप, मतलब ये दिख क्या रहा है, ये बन क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। मैं आपको बताता हूँ बहुत ही सिंपल वे से। ध्यान देना एवरी वन ऑफ यू, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम शोइंग हियर व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। दिस इज प्राइस एक्शन हियर एंड दिस इज वॉल्यूम्स हियर। ठीक है, ये वॉल्यूम है, ये प्राइस एक्शन है, ये प्राइस एक्शन एरियाज है। ओके, दिस इज अ डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्केट। नाउ व्हेन आई एम सीइंग हियर you can clearly see the price action is represented on the left hand side. I'm again repeating, यहां पर मैंने जूम इन किया, ये फ्यूचर्स चार्ट है। फ्यूचर और स्पॉट में अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट्स का फर्क है। कोई बताएगा एग्जैक्ट कितना लेवल है? फ्यूचर और स्पॉट में फर्क कितना है यहां पर? एवरी वन ऑफ यू, इट्स इंपॉर्टेंट। So if you look at the spot is 25,694 and the future price that you are seeing right now 749, so 75 पॉइंट्स का फर्क है। अर्लियर 100 पॉइंट्स का था, चेंज हो गया। नाउ व्हेन यू आर लुकिंग एट दिस, कैन आई से, ध्यान देना व्हाट आई एम शोइंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कैन आई से प्राइस इज गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम 25,950 विच इज अप्रोक्सीमेटली 25,850। आपको याद है एक लेवल मैंने कहा था 25,850 का इंपॉर्टेंट है, 950 अप्रोक्सीमेटली 850 875। यहां से रिजेक्शन हुआ, यहां से रिजेक्शन हुआ, यहां पर इस लेवल के आसपास नहीं आया। So, which means for sure, if I look at the past 1, 2, 3, 4 days of data, closing above this level is very very crucial। और ये लो था, यहां पर लो बना, मतलब ये जो लेवल है ये डिफरेंट वे ऑफ प्राइस एक्शन आइडेंटिफिकेशन है जो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। डू यू एग्री? दिस लेवल is going to be very important, which is over here 25,870 spot is the level. Okay, now where is the volume happening? अभी ये समझ में आया कि भाई अगर मुझे बुलिश रहना है पोजिशनली, सुबह लग रहा था व्हेन प्राइसेस वेंट अबाउट दैट 25,850। आज मॉर्निंग का ट्वीट देखा क्या आपने? यूजफुल था आप लोग के लिए गाइस? द शॉर्ट वीडियोस, द मॉर्निंग ट्वीट लेवल्स आर इट, इज इट यूजफुल? इज इट यूजफुल, इज इट गुड? मॉर्निंग ट्वीट लेवल अभी हम शेयर जो कर रहे हैं आप लोग के लिए। अच्छा, एक और चीज ये है कि हम अभी जो शेयरिंग कर रहे हैं वो शेयरिंग ट्विटर पे, यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे कर रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर एक चैलेंज आ चुका है। मेटा इज नॉट अलाउइंग द मार्केट रिलेटेड कंटेंट इवन फ्रॉम रजिस्टर्ड एंटिटी टू बी शेयर्ड on WhatsApp. They are blocking it, which means they are blocking the numbers, and I don't know why, but that's the challenge. So अगर आपको मॉर्निंग ट्वीट लेवल्स नहीं मिल पा रहे और आप स्ट्रगल कर रहे हो कि कहां गया मेरा मॉर्निंग लेवल, व्हाट्सएप पे क्यों अपडेट नहीं आया, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। वी वर मूविंग आउट ऑफ टेलीग्राम बट नाउ दैट्स लुकिंग लाइक दी सॉल्यूशन। सो यहां मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ में टेलीग्राम का लिंक। डायरेक्टर साथ सभी के साथ टेलीग्राम का लिंक शेयर करिए। यू माइट हैव टू बी ऑन टेलीग्राम एंड यूट्यूब पे भी शेयर करिए। आप लोग टेलीग्राम पे हो कि नहीं हो दोस्तों? आर यू देयर ऑन टेलीग्राम? कैन यू गिव मी अ बिग yes and a thumbs up if you are there on telegram? At least I should know whether you are there on telegram. आप लोग हो टेलीग्राम पे? ओके, लवली। सो अगर आप लोग टेलीग्राम पे हो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि मेरा जो रिसर्च जो मैं कर रहा हूं, जो भी मैं आप लोग को तक पहुंचाना चाहता हूं वो नहीं पहुंच पा रहा है। व्हाट्सएप पे चैलेंज आ रहा है। सो वी आर स्विच
वी हैव स्विच टू टेलीग्राम अगेन। टेलीग्राम का एक चीज ध्यान रखना, टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है वो ये क्यूआर कोड है। अर्लियर द रीजन आई वाज मूविंग आउट ऑफ टेलीग्राम वाज बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फेक चैनल्स इन माय नेम, बट प्लीज एंश्योर यू फॉलो द करेक्ट वन। एंड साथ ही में डू नॉट फॉल इनटू एट मैं someone might come as a spam, as an unsolicited ads, ये सारी चीजें हम नहीं करते। देर इज नो गारंटी इन द मार्केट, रिमेंबर दैट। पैसा डबल नहीं होता है ओवरनाइट, रिमेंबर दैट। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ओके। सो आई ऑलवेज से देर इज अ रिस्क, मेंटेन स्टॉप लॉस। इफ यू सी any unsolicited ads or channel claiming to be me and saying that double हो जाएगा पैसा, that is not me. You cannot double overnight. There is risk. Understand, it's not a gambling, it's not a money minting machine. It's a science, a systematic way in which you can trade and it works. डिसिप्लिन फैशन से, और मैं आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनाना चाहता हूं, एंड यू विल बिकम अ वंडरफुल ट्रेडर, बट यू हैव टू टेक दैट स्टेप ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस यू नो इशू। चलिए अभी मैं चार्ट पे वापस आता हूं। ओके, नाउ दिस चार्ट इज व्हाट आई एम शोइंग, सो विच मींस वन लेवल इज वेरी क्लियर। निफ्टी एज पर मार्केट प्रोफाइल needs to break and move above 25,850 levels to ensure break and close above, actually move in close above this level to ensure positive price action is to ensure a major breakout with short covering. ओके, ऊपर का लेवल मिला, नीचे के लेवल पे बहुत ही इंटरेस्टिंग, वापस से नीचे का लेवल देखते हैं। मैंने 25,600 का एक लेवल बता रखा है, मैं यहां पर देखता भी हूं। इफ आई कम हियर, कैन आई से दिस इज द लेवल। ये अगर आप देखोगे तो बार चार्ट से भी दिख सकता है, कैंडल चार्ट से भी दिख सकता है, बट यहां पर जो क्लैरिटी आपको दिखेगी ना, वो कहीं पे भी नहीं दिखेगी। नाउ I'm going to show you a very interesting thing about market profile. Okay, breakout with short covering. However, below 25,600, get ready for downside trade setups. Market profile at its best. यहां पर अगर हम देखेंगे, यहां पर now when you are seeing this thing बहुत ही क्लियरली, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? द ब्रेथ। ओके, आर यू एबल टू सी द अल्फाबेट्स हियर? पीपल हु आर देयर ऑन यूट्यूब, आप जूम पे जुड़िए, बिकॉज अगर आप जूम पे आएंगे तो ही आपको क्लैरिटी से दिखेगा। आप जूम पे नहीं आएंगे तो क्लैरिटी से नहीं दिखेगा। यहां पर, सो वंस यू आर हियर, व्हाट यू हैव टू डू इज, ये अल्फाबेट्स दिख रहे हैं आपको गाइस? अल्फाबेट्स दिख रहे हैं लिखा हुआ, ABCD यहां दिख रहा है। ओके, नाउ आज के दिन में मैक्सिमम जो टाइम स्पेंड किया प्राइसेस ने यहां पर किया, मैक्सिमम टाइम स्पेंड यहां पर हुआ, विच इज ऑल्सो दी हाई वॉल्यूम प्रोफाइल एरिया। इस पहले के दिन में, प्रायर डे, मैक्सिमम टाइम स्पेंड जो प्राइसेस ने किया वो इस लेवल के आसपास ही किया, विच इज नियर दिस लेवल। अगेन द मैक्सिमम टाइम स्पेंड इज हियर, बिकॉज ये सबसे ज्यादा विड्थ है। दिस इज द मैक्सिमम टाइम स्पेंड, दिस एरिया, दिस इज वेयर द मैक्सिमम टाइम हैज बीन स्पेंड। वाओ, मतलब एग्जैक्ट एक लेवल ऐसा है जहां प्राइसेस मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहा है। मैक्सिमम टाइम इज स्पेंट अक्रॉस just one price level, and that price level where maximum time is spent across, as per the futures chart is 25,785, 25,790 लेते हैं, 25,785, 25,790 is the level where huge amount of time is spent,
मैं फिर लिख रहा हूं 25,790 एज पर फ्यूचर्स। स्पॉट के हिसाब से क्या होगा? 25,730 के आसपास। वाह, कैसे समझा? मुझे मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया। ये कैंडल स्टिक नहीं देगा, ये बार चार्ट नहीं देगा, ये आपको एक ही चार्ट देगा, वो है मार्केट प्रोफाइल। दिस चार्ट शोज दैट दिस इज वेयर आई हैव GHIJKLM, which means each alphabet represents 30 minutes. Each alphabet represents 30 minutes. GHIJKLM मतलब 30 मिनट्स यहां स्पेंड हुआ। ठीक है, एम मतलब लास्ट का 30 मिनट्स। सिमिलरली यहां पर, तो अगर मैं इस तरीके से देखूं तो मैक्सिमम टाइम क्यूमुलेटिव बेसिस पे इस वॉल्यूम प्रोफाइल पे बना है। दिस इज द अल्टीमेट मैग्नेट। 25,730 level is the ultimate magnet where price have spent maximum amount of time। और ये मैक्सिमम टाइम यहां पर इसलिए स्पेंड कर पाया है बिकॉज दिस maximum time it is spending here, it represents a very important detail। ये इसलिए maximum time spend कर पाया because there is a division between the bulls and the bears, resulting into a state of confusion। But when we see behind the scenes what is happening, behind the scenes हो क्या रहा है, this is what we are seeing here now। This is 25,730। Now, along with that, this is a 30-minute chart. I can now increase my profiling. And can you see that the past profile also was this level? If I am looking at this overall chart, okay, अगर मैं ये सारा का सारा overall chart देख रहा हूं, don't get confused with what I am showing, what's happening around. I'm just explaining it to you. If I'm saying showing this entire chart to you, can I say that there is acceptance here with huge volumes happening? I'm again repeating, this is a very important question. Can I say that this is market profile terminology I'm using? Can I say that there is an acceptance at the lower level with huge volume happening? One second, I'll just do one more thing. I'll remove the individual. Okay, I'll remove the individual. I'm just checking if I have. How do I remove the show? I want the composite one. I don't want the session one. So volume चाहिए. I don't want the line to be there. Orientation. I use the lines usually. Value area. I need the market profile POCs is what I need. I don't the initial balance range. Okay, let it be. Let it be. चलो जाने दो। थोड़ा सा मैं सोचा था आपके लिए चार्ट क्लियर करूं, बट मेरा पूरा सेटअप बिगड़ जाएगा वो चक्कर में। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू डू दी changes now। If I'm looking at this overall, if I go back to the chart on trading view now, if I go back to my trading view chart, you will see a lot of interesting things happening now। What I just now showed, अभी ये देख के लग रहा है हाँ रिलीफ, कुछ तो समझ में आया। Okay, what I just now showed to all of you in a very simple way, in a layman's language, is that prices were breaking down. All of these levels were expected. This is the high area of volume, and acceptance is happening near the lower end of the range, which is not a good sign। Which means if गलती से मार्केट ने 25,600 ब्रेक कर दिया, it's not going to go back above easily। 25,600 is the ultimate level. It should not breach it। If 25,600 is breached, it's not going to go up easily। That is very important, and I'm just going to make a note of it overall here।
25,600 is the level. If this level gets breached, this is high market profile area. Not only volume. When I say market profile, which means price and volume both are going to be at this level. So this is very high market profile area. Very high market profile area. Now, when there is a very high market profile area at this zone at 25,600 levels, it's not a good sign. So, अभी करना क्या है हमें? ट्रेड कैसे लेना है? ट्रेड लेने के लिए when we have the weekly which is on the upside, still not changed. Daily which is on the downside very strongly, and the profile which is the market profile suggesting the key magnet as 25,728. That's the key magnet. Breakdown is below 25,600. Acceptance above. These are all market profile language I am talking about. Acceptance above. Which level needs to be crossed above? कौन से लेवल के ऊपर कंफर्ट जोन आएगा मुझे? 25,850. Can you see that a complete profiling has happened? होता है ना, हम ह्यूमन प्रोफाइलिंग करते हैं, हम बहुत सारे प्रोफाइलिंग करते हैं. मैंने मार्केट का प्रोफाइलिंग कर दिया complete. 25,728 is the market profile zone, highest ever volume happening with the market profile there. 25,600 के नीचे, I'm not going into 25,500, 600 के नीचे, a clear cut breakdown in acceptance is happening down. Upside 25,850 is must, 850, 870 is must. उसके ऊपर आज कोशिश कर रहे थे लेकिन सस्टेन नहीं कर पाते. And these levels will decide how Monday opening our candle is going to play a very, very vital role. Are you with me? So Nifty market profile with time cycle is giving a brilliant combo of identifying in and out of big players activity. This is like never before, which means that 25,728 magnet break down level, 25,600 acceptance above, 25,850 must. यहां पर मैंने आपको भेजा. नाउ अभी इसमें ट्रेड करने का कैसे करना है? Are there options trader here? Are there people who are trading in options by any chance? These are all spot levels I mentioned. These are all spot levels. Are there option traders here? Now, if you're an option trader and you know this kind of a balance is there in the market, this is known as balance. We want to search for imbalance. If this is the balance in the market and if you're trading into options, it's very important for you to understand one very simple concept. Market अटका हुआ है और because of Trump, IVs increased, which means by short strangle, we can still make money. But the strike price has to be far away. Because if you come near the strike price, sustainability becomes a question mark because volatility is high. How do you gauge volatility? Use ATR. Do you remember I've talked about ATR? ATR represents volatility, wicks and everything. I've talked about it. So volatility is represented by ATR. If the ATR is rising, which means volatility is rising. And that's why we can see right now ATR is high, candle size is big. And so it's an opportunity again for traders. Whether you are an option buyer, good opportunity is going to come in the coming week.
That is for sure. I have no doubt about it. Whether markets goes break down or break out, it's going to be an opportunity, because once it starts there, it's not going to stop for next 6 to 8 days. Next 6 to 8 trading sessions will be decided basis of this one level breaking out. I'm telling you very clearly. These these levels on the upside or downside is going to set for next 6 to 8 trading sessions. Prices are heading there. Until when? Let's come back to the Kal Chakra. Until 5th of March 2026. Why 5th of March 2026? Because this is a 55 days of time cycle. This is a 55 days of time cycle. This is the zone where prices have a tendency of reversing after forming a low. If it breaks down from here, ideally it has already done that by breaking below this time support at least once. But still, let's give it benefit of doubt. अगर 25,600 निकल के क्लोज हो गया, 5 मार्च तक तेजी करना मुश्किल होगा. इसका मतलब ये नहीं कि नीचे जाके ऊपर नहीं आया, नीचे जाएगा ऊपर आएगा, नीचे जाएगा ऊपर आएगा, which means that overall this is the level. विराज है यहाँ पे, सर आई हैश बॉट ऑप्शंस ऑन डिफरेंट प्राइस टुडे एंड 40%. ग्लैड टू नो, मेरा ट्वीट आपके लिए हेल्प कर रहा है. Fantastic. I'm glad to know that. So 5th of March. Now I'm going to ask you one more question. Do you think combining this market profile technique, which I just now showed to you, not even taught you, I just showed it to you for maybe 10 minutes, and then combining with time cycle, is it going to be useful for you all? I'm asking all the Brahmastra participants here. अगर आपके लिए यूजफुल होगा क्या, तो एक काम करें क्या, upcoming Kal Chakra session, which is going to happen on 7th 8th of February. 7th 8th Feb में upcoming Kal Chakra session जो हमारा हो रहा है, shall I devote some time on market profiling and combining with time cycle? We have never done that ever before. I'm doing it for the first time. So whoever is the Brahmastra participant right now in this current batch or upcoming batch will be a part of it. If I get a big yes, I don't want to confuse you with too many techniques, too many astras. I just want to know if you are okay with it. I can teach you that. Only if you are okay with it. If you are okay with it, I will introduce market profile in an upcoming Kal Chakra session 7th and 8th of Feb, which is happening. So, अगर आप लोग ready हो, not to get overwhelmed by it, but वो concept बहुत जबरदस्त है. There is a concept known as imbalance. There is a concept known as single print. ये बहुत सारी पुअर हाई एंड पुअर लो, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं सब कुछ नहीं सिखाऊंगा आपको. मैं खाली उसमें से स्ट्रैटेजी पिकअप करूंगा जो आपको जाके अप्लाई करना है मार्केट पे. आप लोग रेडी हो क्या? फैंटास्टिक. सो यहां पर अगर हम देखेंगे, यहां पर बहुत ही क्लियरली आई हैव शेयर्ड अक्रॉस वेरी वेरी क्लियर how to look at it in a very simple fashion, but I have never ever showed anyone how do I combine this market profile with time cycle, and which is what we are going to do that. Price have the price not broken? Yes, it has broken. The previous swing low is broken, of course, definitely, and that's why I'm saying we are standing on the cusp. Cusp का मतलब होता है inflection zone. We are standing on that inflection zone where the pendulum is getting tilted more and more to be shifted on the downside until the date is 5th of March. The date is 5th of March. So until 5th of March, things are now getting more. जितना टाइम यहाँ पे स्पेंड करा ना, उतनी नर्वसनेस बढ़ रही है. If it would have today was the final attempt on the upside, कितना बड़ा रिजेक्शन आया यार, कितना बड़ा रिजेक्शन आया. Not a good sign. Getting rejected from the higher levels, that too at a high volume, not a good sign. You might have heard me for the first time talking about it in this entire trend. Not a good sign. It's okay, because भाव भगवान छे, समय बलवान छे, ट्रेडर पहलवान छे. It is similar to 24,728. Yes, it's a coincidence. हमारा जो मैग्नेट गेन था 24,728 का, नाउ 25,728 भी वहीं पे आ रहा है. इट्स अ वेरी वेरी हाई कोइंसिडेंस कि इस तरीके से बिहेवियर हो रहा है मार्केट का.
So that's very, very interesting. I have not even touched upon an hourly chart from a two stage. Neo wave देखना है क्या हमें? Shall we look at a neo wave perspective? What's happening around? From a neo wave perspective, this looks like a classic triangle pattern. Classic triangle pattern. It's just not doing anything. Triangle बन गया यहाँ पे. Possible है this move was one, running maybe two. This was third. We are completed A, B, C, maybe D. Possible है E आएगा and then move down. And yes, this is going to be an X wave right now, which is going on. That's how I'm looking at it. That's how it's look like as of now. Possible hai, this is what is there. And I need a breakout above. If I'm going to be bullish, I need. See, evidence कहाँ point कर रहे? पहले तो वो देख रहे. Evidence is pointing towards this size. Okay. And evidence is pointing towards downside. Heavy to prove bulls have to fight back, which they are failing to do so abhi tak. So Nifty bulls have failed to close above prior high. Looks like classic triangle pattern in making, and one more attempt in wave E, post which we can move down. यहां पर सिंपल वे से क्लियर है ना every one of you? So this is how I am looking at the chart. This is how it looks like a triangle pattern, trapping each direction, not sustaining anywhere. कंप्लीट होने के बाद 6 से 7 दिन का ट्रेंड चालू होगा दोस्तों. It's going to happen. Fantastic. एंड गाइस हमारे साथ कौन कौन है काल चक्र के लिए रेडी? यहां पर पीपल आर आस्किंग अबाउट सर हाउ डू आई रजिस्टर फॉर काल चक्र. You can be a part of upcoming Kal Chakra training program. I'm just going to share across the link very clearly. Here is the link. You can be a part of this training program, which is going to be different. डायरेक्टर साहब यहाँ नोट करना, ऐड करना, क्योंकि मैंने आज ही अनाउंस किया है. We will include a part of market profiling in the Kal Chakra for the very first time, which we have never ever done that. So market profile is going to be a part of upcoming Kal Chakra. I'm not going to teach you complete market profile. It's a vast subject. I'm only going to teach you few things about market profile, how to pick up those key levels from the profiling, look at the volumes, look at big players activity, and dive into the trade. That's what I'm going to do that, and that's going to be happening in this Kal Chakra for the very first time. And existing Brahmastra batch wale to hi, upcoming batch wale bhi usme honge. That's what I want to tell you very clearly. You can be a part of it. You can go and register on the link which is shared across, and you are going to love what we are going to do in this program. Also, tomorrow we are going to have a very super master class, which is going to be about time, how to use time cycle for selling opportunity, जो हमने अभी तक नहीं किया. Because since the things are changing, I thought I'll explain you sell side setup also. कौन कौन है ready कल मास्टर क्लास के लिए 11 बजे, which is going to be happening on 17th of Feb, 17th of Jan. We are in Jan, and यहाँ पर for it's going to be at 11. You need to go on the link. You need to register on the link. Once you go there, I'm going to teach you sell side setup for time cycle, how to trade sell side setup, how to trade buy side setup without being biased in any direction. How can you be one of the best trader the world has ever seen? So link आपके साथ share किया है दोस्तों यहाँ पर, और without fail ensure you are joining me on that link very clearly for the masterclass, and I'm open for questions. Was this today's Friday at 4 useful for you all? I'm just asking. Do we have Brahmastra session on this Wednesday? Yes, Webber, बिल्कुल है. Brahmastra session ये Wednesday को grand finale है, session number 9 है. Do not forget to join. It's going to be there upcoming Wednesday, which is going to be there. हमारा session है. So it's going to be lovely.
Okay, so यहाँ पर I'm open for questions. Sir, I am registering for Kal Chakra. Will I be also learning about time cycle with NeoWave? नहीं. NeoWave is not a part of Kal Chakra. NeoWave is a part of Brahmastra. So if you're registering for Kal Chakra, you get time cycles plus market profile plus gain. We'll be looking at market profiling techniques in the upcoming Kal Chakra session. Okay, यहाँ पर fantastic Sugandh. I can see you have done it 3 years back. I'm sure it's working for you. Praveen Kare sir, very useful discussion in this confusing market. Thank you very much. Glad to know that. Sir, I have registered for Brahmastra now. Fantastic. Can I pay 10K token? Mayank is asking. Directors आप 10K ब्रह्मास्त्र का टोकन दे दीजिए ना, लिंक फॉर एवरीवन. यहाँ पर you can register for Brahmastra and you will be a part of Kal Chakra. Don't have to register separately for Kal Chakra. Sir, can you share the schedule? See, we are going to meet on 7th and 8th of Feb for Kal Chakra. We will be starting with the concepts of time cycle. मैं आपको सिखाऊंगा कैसे time cycle apply करना है. I'm going to share across Excel sheet with you. You will be able to derive time yourself also. Plus, I'll be looking at Gantt square of 9. कैसे उसे derive करना है. Plus, we'll be looking at custom indicator basis of time cycle. कैसे हमारे indicator parameters derive होने चाहिए. That's going to be there. Next is day 2. We will be looking at market profile for the very first time. Some concept. I'm not going to complete market profile. I'm going to explain you some concepts which can help you to take a much better decision, giving you the edge of time and profile over everyone else. We are going to be doing that. How to be confident in selecting period. Pring special K आपने किया है क्या? महेश, Pring special K हमारा एक part है in the 7th and 8th for which is going to be about how do I select those cycles. Pring special K is the indicator name. That's the indicator name. So you need to be, once you use that, it's going to be separate, different. These alphabets are intriguing in market profile. Saw it for the first time. Yes. Yeah, I keep researching. I keep doing all of these things and I share it across. That's what I do. Ashima. Lovely. Fantastic. I'm also going to take a very quick poll for every one of you who wants to be a part of this. Which part to financial freedom? I'm just going to take a poll. Please ensure you are participating in the poll here so that I'm aware आप हो मेरे साथ में जुड़े हुए for this lovely sessions. It's going to be amazing. Okay, there is another question here. कौन कौन है यहाँ पर जो जुड़ते जा रहे हैं? कंफर्मेशन डालते जाइए मेरे साथ में. Sir, can I see the video of today? Yes, it's there on YouTube. People on YouTube, are you guys active there? I'll check the chat. I have not checked the chat yet. आप लोग एक्टिव हो तो make some noise on YouTube, please. Okay, Chaitanya, it's always fantastic to have you also here with me. You have been a wonderful Brahmastra participants, always lovely. And superb. यहाँ पर एक और क्वेश्चन है. सर, आई हैव रजिस्टर्ड फॉर ब्रह्मास्त्र राइट नाउ. कैन आई गेट एक्सेस टू द वीडियोस एंड द बोनसेस? यस, I'll be, my team will set you up. Don't worry. Just drop your number and my team will set you up for everything. Okay, fantastic, guys. Super. This was lovely speaking to all of you. It was wonderful and it's going to be amazing. I'm sure you are going to love what we are going to do. Thank you everyone for joining me. We are going to meet tomorrow, which is 17th of Jan, 11 a.m., where I'm going to teach you about cycles, how to trade it on the sell side as well. Okay. Thank you very much. Have a wonderful time. Become a wonderful trader. Ashish Kyal signing off. And yes, one more thing very quickly before I move on. Okay, I just forgot to show you the disclaimer. Okay, my team just reminded the disclaimer is important, and let me just show you across. So to ensure that, let me just share my screen across very quickly. We are SEBI registered research analyst. Whatever we are doing is purely learning perspective. Keep that in mind. Investment in market is risky. There is no guarantee in the markets. Remember that. And quick disclosure, guys, it's going to be lovely. Thank you very much. And the poll is ongoing. Poll में आप participate कर सकते हैं. Thank you.